Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Hizi stressi pesa zinaniweka roho juu, kula vitamu mama mpaka sikukuu. Hi guys, good morning, welcome back to my channel and let me tell you सबसे पहली चीज़ कि आज मैं 1.5 हफ्ते बाद सुबह इतनी जल्दी उठी हूँ एंड मोस्टली मैं अपनी फ़र्स्ट क्लास मिस कर देती हूँ बिकॉज इतनी ज़्यादा ठंड होने लगी है ऋषिकेश में एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अप इन द मॉर्निंग एटलीस्ट फॉर मी। एंड उठते ही फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेस वॉश कर रहे हैं एंड दीज डेज आई एम यूजिंग दिस चारकोल फेस वॉश एंड इट हैज़ रियली हेल्प मी विद द टैनिंग जो भी समर में हुई एंड ऑल दैट। एंड उसके बाद टुडे बिकॉज मैं जल्दी उठी थी आई एम गोना टेक अ बाथ, नहीं तो मैं बिना नहाए जाती हूँ एंड यूजुअली आई टेक bath in the evenings. And skincare, that is one thing I do not miss. I do a proper 5-step skincare with a moisturizer and a sunscreen, and I don't know about others and if this thing is gonna make sense to you or not, but doing my skincare is very therapeutic, at least for me, because when my skin is glowing I feel confident and I don't know, I feel good. And today I also washed my hair, and this is also something very weird because usually I wash my hair on weekends or in the evenings because सुबह तो मैं क्लास चली जाऊँ वही बहुत बड़ी बात होती है these days तो। And also we have started having dry fruits, and now I'll just get ready, pick up my bag and leave for the class. By the way, did you guys noticed any difference? सो आई हैड टू डू माई ब्रेकफास्ट, बट जब मैं मेस गई तो ऑलरेडी जूनियर बैच जो कि अभी जस्ट आया है एंड ऑल्सो हमारा बैच, एंड बहुत लंबी लाइन थी, सो आई स्किप ब्रेकफास्ट फॉर दैट टाइम बीइंग एंड वेंट टू द फर्स्ट क्लास जो आई डोंट रिमेंबर किस चीज़ की थी। एंड देन आई वेंट टू पोस्टिंग एंड पहली अटेंडेंस फटाफट से लगाकर आई रश टू द मेस बिकॉज ब्रेकफास्ट का टाइम ख़त्म होने वाला था। वी हैड अ ब्रेकफास्ट एंड देन आई केम बैक टू द वार्ड, टुक अ केस, and then me and my friends went for lunch. Hi vlog, how are you? Hey, so every time we talk about the importance of giving mock tests, and I've realized that I've always given you options of online test series, but NEET exam to offline hoga na, and it's very important that you people should have a habit of giving offline test series also. And if you ask me why, then it'll help you decide your paper solving strategy, the way of handling question paper physically, and usse bhi zyada important, sahi OMR filling. And for those of you who don't have the facility of offline coaching centers, you do not need to worry. You just need to order an offline test series, a good one, and the one which I would suggest is the one from NEET Prep. This is the HYTS book, and let me tell you why this is the best option out there for you guys. Firstly, it is strictly NCERT based and according to the latest NEET pattern like statement based questions, assertion reasons, true-false questions, matchups, etc., which will give you the knowledge only that you require and no faltu stress. Secondly, it has 20 full syllabus mock tests, half level 1, which means the ones that will boost your confidence so that you do not run away from giving the mocks, and the rest half level 2, that involves the application of multiple concepts for an extra edge to your preparation. Next we have OMR sheets for you to practice so that you don't lose any marks, वो भी OMR गलत fill करने की वजह से. And lastly, for the solutions you can refer to the Telegram bot @HYTSbot for audio and video solutions. So what are you waiting for? Go get your hands on this amazing book and thank me later. Or if you want some extra discount, go fill the form from the link given in the description. And these days I've literally become a coffee addict. Anyways, uske baad we attended our post lunch ke lectures, and then luckily that day we got free at 3 p.m. So I went to the library because we had our endocrine ka test in pharmacology monthly assessment on 6th of December. Uske liye I was preparing, and at this time, as far as I remember, I was solving MCQs because the test was MCQ. And yeah, I am so damn hungry. मैंने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं की है. सबसे पहले will be eating. My room is a mess. I don't have a fork. We can
So today is one of those lucky days जहाँ हमारी छुट्टी 3 बजे हो गई एंड मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी बिकॉज लिटरली मेस में जगह ही नहीं होती है पैर रखने की बिकॉज नया बैच आया है एंड उनका पूरा बैच एंड हमारा बैच एंड सेम लंच टाइमिंग्स हैं तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लंच किया था एंड अभी एज यू जस्ट सॉ आई हैड पास्ता एंड अभी विल बी गोइंग टू द लाइब्रेरी एंड आई प्लान टू स्टडी एट अ स्ट्रेच बिकॉज फार्मा का एग्ज़ाम है। वैसे तो आई प्रिपेयर्ड, आई ऑल्सो रिवाइज ट्वाइस बट स्टिल आई फील कि आई एम forgetting things, so we'll be studying again, we'll be solving MCQs and yeah, I don't know मैं कैसे अपने फ़ोन का चार्जर रूम पर भूल आई हूँ। आई हैव द अडाप्टर बट आई डोंट हैव दैट आईफोन वाली केबल एंड लिटरली मेरे फ़ोन में 5% बैटरी है। लेट्स सी। So we begin by making a to-do list and started studying microbiology and उसमें भी I am studying hemoflagellates and parasitology because we also have a test coming up for that, and with this we are almost done with the studies part of that day. So it's time for the nighttime skincare, and as I told, these days I'm using the deep cleansing charcoal face wash from Nude, which has ingredients like charcoal and licorice with a mild fragrance that helps reduce the acne, bacteria, and also helps reduce the pores and helps you get that super glow. And if you want to get your hands on this amazing product, you can get it from the official website of Nude and also from Amazon and Meesho, and all the links are mentioned in the description box, so you can check that out. You know what, this time is my favorite because generally मैं अपना स्किन केयर डिनर से पहले कर लेती हूँ एंड दिस टाइम इज़ सोली डेडिकेटेड फॉर माई हेयर केयर जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। एंड विद द बैड न्यूज़ इज़ कि आई एम हैविंग अ रियली बैड हेयर फॉल, इसलिए आई हैव चॉप्ड ऑफ माई हेयर इफ़ यू गाइज हैव नोटिस्ड। एंड लुक, आई डोंट नो, मैंने लाइक 2 घंटे पहले कोम की थी डिनर के बाद एंड अभी भी इट्स टू बैड। एंड आई ऑल्सो गॉट माई ब्लड टेस्ट डन एंड उसमें folic acid and vitamin D was very low, so I have even ordered the supplements. And there's one very cool thing that I have to show you guys. This, I've got this from Nykaa's I don't know, Pink Friday sale जो अभी recently चल रही थी November end to 1st December में। And wait a second, look how cute is that, and see, this is a scalp massager, I'm not even kidding, and this is so relaxing and this is so cool. I can literally do this for 30 minutes to 1 hour straight. So this is basically a hair growth serum that I've recently added in my routine for, you know, all the hair fall. And with this we come towards the end of this vlog, and do tell me in the comment section how you guys liked it, and in case you want some changes or there's something you would like me to do, any suggestions, anything, just drop down in the comment section. And yeah, bye bye, good night.